Students, today we are going to understand next sum from accounting for share capital. Sum number 21. Sarda Limited issued 6 lakh equity shares at rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. Amount called up per share is as under. On application rupees 4, on allotment rupees 3 face value, and here 4 rupees is premium. On share first and final call rupees 3, subscription were received 3.5 times, out of which 4 upon 7th the share applications were rejected fully and pro rata allotment was made to the remaining applicants. Excess application money were credited to share allotment and share calls. Write the necessary journal entries in the books of Sarda Limited. Then students, subscription were received for 3.5 times, and out of which 4 upon 7th share applications were rejected fully and pro rata allotment was made. इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी स्टूडेंट. 6 लाख का 3.5 टाइम्स हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं. कैलकुलेशन application received 6 lakh multiply by 3.5 करेंगे, देन 21 lakh एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड होती हैं. प्रोराटा इज मेड एंड आफ्टर दैट अलॉटमेंट, हम अलॉटमेंट करेंगे स्टूडेंट्स 6 लाख शेयर्स को, बिकॉज कंपनी इश्यू करती है 6 लाख शेयर्स. देन स्टूडेंट्स 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7 शेयर्स आर रिजेक्टेड. रिजेक्टेड मीन्स प्रोराटा और एप्लीकेशन रिसीव्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है रिजेक्टेड. और ये 12 लाख शेयर्स बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे पर रुपीज़ 4 के रेट से. एप्लीकेशन के टाइम पर 4 रुपीज़ मंगवाए जाते हैं. देन 21 लाख माइनस 12 लाख करेंगे, देन प्रोराटा 9 लाख पर किया जाएगा. 9 लाख शेयर्स पर 9 लाख और 6 लाख मीन्स प्रोराटा और अलॉटमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो अलॉटमेंट इन एडवांस होगा. डिफरेंस 3 लाख. देन बाइफरकेट करेंगे. शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड 21 lakh लेस allotment in advance 3 lakh 18 lakh, then less बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होगा रिजेक्टेड शेयर्स 12 लाख, एंड फाइनली 6 लाख शेयर्स को अलॉट किया जाएगा जो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में. देन एंट्री देंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account. 21 lakh multiply by 4 84 lakh. 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर कॉल्ड अप करवाए जाते हैं इसलिए. देन नरेशन बीइंग amount of application is received on 21 lakh equity shares at rupees 4 per share. Then
अलॉटमेंट की जाएगी स्टूडेंट्स। सेकेंड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू allotment in advance account to bank account. ₹84,00,000 ₹6,00,000 ट्रांसफर किए जाएंगे कैपिटल में, देन ₹4 ₹24,00,000 ₹12,00,000 ट्रांसफर किए जाएंगे रिजेक्शन में, मींस बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा ₹48,00,000, then ₹3,00,000 is allotment in advance, ₹12,00,000. Narration being applications are allotted on 6,00,000 equity shares and pro rata is made. Then students called up करेंगे allotment money, then entry will be equity share allotment account debit to equity share capital account. Here premium is given, so to security premium account. Then total ₹7 कॉल्ड अप करवाए जाते हैं, 6,00,000 मल्टीप्लाई बाय 7 ₹42,00,000. ₹3 is face value, then it is transferred to capital account 18,00,000 and ₹4 here premium, then 6,00,000 multiplied by 4 will be transferred to security premium account 24,00,000. Then narration being amount of allotment is called on 6,00,000 equity shares at ₹7 per share with premium. Then ये अमाउंट मिलेगी स्टूडेंट्स. फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एंड जो अमाउंट हमें पहले मिल चुकी है अलॉटमेंट इन एडवांस, मींस अलॉटमेंट की एडवांस मनी हमें मिल चुकी है वो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. हमने अमाउंट कॉल्ड अप करवाई थी 42,00,000 एंड 12,00,000 हमें अलॉटमेंट इन एडवांस में मिल चुके हैं. 42,00,000 माइनस 12,00,000 ₹30,00,000 हमें मिल जाएंगे. देन नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ allotment is received. Then first and final कॉल करवाएंगे स्टूडेंट्स. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
3 rupees per share means 6 lakh multiply by 3, then 18 lakh कॉल्ड अप करवाए जाएंगे. Narration being amount of first and final call is called on 6 lakh equity shares at rupees 3 per share. देन ये अमाउंट मिलेगी स्टूडेंट्स. 6 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. Here calls in arrears is not given, so we will not write. 2 equity share first and final call account. 18 लाख हमें फुल्ली मिल जाएंगे, मीन्स कंपनी को 18 लाख मिल जाएंगे, इसलिए 18 लाख. Then narration being amount of first and final call is received. Then student sum is completed. टोटल करेंगे. $84 lakh plus 84 lakh plus 42 lakh plus 42 lakh plus 18 lakh plus 18 lakh. Then amount will be 2 crore 88 lakh. Total amount 2 crore 88 lakh. 2 करोड़ 88 लाख. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 21. नेक्स्ट सम के साथ स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.